start with Strassen's matrix multiplication. Okay, so first of all, let's discuss the basic concept of multiplying two matrices. Okay, so how do you multiply two matrices? First and foremost, let's consider this is the case of 2 cross 2 matrices. Okay, both are 2 cross 2. The indices also match. Okay, this is also 2 cross 2, and in that case, you will consider the initial also, and this is also 2 cross 2 matrix only. Okay, so these two match, so we are going to obtain a 2 cross 2 matrix. How do you multiply? 1 into 9 plus 2 into 7, then 1 into 6 plus 2 into 8, one row and then one column. Perfect. So how many statements like this you are going to obtain in this particular case? That would be actually 4 statements. 1 into 9 plus 2 into 7, and the final answer that you're going to obtain is 23 in this case, because 1 into 9 plus 7 into 14 is 23. So basic way of multiplying the matrices is row into column. For this, the naive approach in case of coding for multiplication involves taking the elements of A element, A matrix, B matrix, and then the C matrix is the final matrix obtained. So we use 3 for loops, and 2 of them are actually nested inside the other one. And what is the time complexity for this statement? This would be n. This would be n. Okay, this one would also be n. But since it is nested, so it will be multiplied with the time complexity of the upper statement, which is n. So this would be n square. For this statement too, there are n elements, so this will be n multiplied by n multiplied by n. That is multiplied by the time complexity of the above matrices, above statement, sorry. And the above statement has the time complexity of n cross n. So we are going to multiply. So final time complexity will be like big O of n cube. Okay, big O of n cube. Final time complexity. So let's come why Strassen's matrix multiplication. So we use Strassen matrix multiplication to reduce this time complexity a little bit, so that it's easier to compute as a better one as compared to the naive approach. When we used to reduce a time, when we want to reduce the time complexity, so we use this approach. Okay, so Strassen's matrix multiplication is actually based on divide and conquer strategy. What is divide and conquer strategy? Divide and conquer strategy involves dividing a big problem into small subproblems. We solve these small subproblems and then combine the solutions to obtain the final solution. This is our point, that we divide the subproblem in such a way that to obtain the final solution, we solve the small subproblems. Okay, and a big problem. So now what is a big problem in your consideration? What can be a big problem? Correct. This is a task, like what is a big problem? So a big problem is not a 2 cross 2 multiplication matrix. Is really easy. आप कर सकते हैं very easily. 1 cross 1 is also pretty easy. But 4 cross 4 का multiplication is really difficult. 3 cross 3 के multiplication भी हम कर सकते हैं, but it's a slightly difficult as compared to 2 cross 2. And 9 cross 9 की जब बात आएगी, it's impossible for us. We'll never ever be able to do the 9 cross 9 matrix multiplication. So this is a big problem. So what is the solution? Dividing it into some small subproblems. कि भाई 9 cross 9 को compute करना है, so we have to divide it into small problems. And what can be the small subproblems? The small subproblems can be like 9 cross 9 is converted into either 2 cross 2, because 3 cross 3 is really big. It's not a very small task. This one is the easiest one, जो कि easily हम compute कर सकते हैं. And इससे भी better 1 cross 1 है, which is much easier. But
जो हम कॉमन सेंस में कहेंगे कंप्यूटर के लिए भी दैट इज बेस्ट दैट इट हैज टू do multiplication in 2 cross 2 manner. Okay, so 2 cross 2 would be the easiest approach for a computer too. Okay, so but there was a question like हमने सोचा कि okay 9 cross 9 को we'll convert into 2 cross 2 and it would be easy. But उससे पहले हम ये तो देख लें like 3 cross 3 को आप कैसे convert करोगे 2 cross 2 में? What's the way of converting 3 cross 3 into 2 cross 2 matrix? ये भी आप कर पाओगे तो बहुत बड़ी बात होगी because this is a 3 cross 3 matrix. Will you be able to convert it into a 2 cross 2 matrix? Is it possible or not? So for converting it into 2 cross 2 matrices, we are going to add some zeros. 4 cross 4 से पहले हम क्या करेंगे 3 cross 3 matrix को 4 cross 4 matrix में convert करेंगे and then we are going to divide it into some 2 cross 2 matrix. Okay, so what is the final way? 4 cross 4 matrix should be converted into 2 cross 2 matrix by adding the zeros. Okay, basically approach ये होगा. Okay, so by adding zeros we are going to convert it into, so this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 is converted into a 4 cross 4 matrix. Okay, this is a 4 cross 4 matrix में conversion है. Now how we are going to divide it into 2 cross 2 matrix? So the basic simpler procedure is this is divided into this way. Okay, I'm sorry, so this will be divided into this way, this would be this, and in this case this would be like this. Okay, so we have obtained 4 matrices of 2 cross 2, 1 4 2 5 3 6 0 0 7 8 0 0 and 9 0 0 0. Now we will be easily able to compute the matrix. So this is the procedure of Strassen's matrix multiplication. There are some procedures. Now what are the procedures? The first procedure is dividing the matrix of n cross n recursively till we get the matrix of 2 cross 2. Use the previous set of formulas to calculate 2 cross 2 matrix multiplication. यानी जो अगर हमारे पास 2 cross 2 matrix multiplication obtain हो गया है, so what we can do, the previous formulas क्या थे, इस तरह से like this is the previous formula कि हम लोग ऐसे multiply करेंगे. If you consider it like मान लीजिए आपके पास ये matrix कुछ x है, okay, and this is some y matrix, I'm sorry, okay, y, this is x, okay. So y में क्या होगा, y11 y12 y21 y33. तो y11 को मल्टीप्लाई करेंगे आप x11 से प्लस y12 को मल्टीप्लाई करेंगे x21 से. दिस इज लाइक अ फॉर्मूला ओनली फॉर कोडिंग पर्पसेस बिकॉज हम डायरेक्टली नंबर्स नहीं लिखेंगे ना व्हाइल कोडिंग. सो वी आर गोइंग टू कैरी आउट द 2 cross 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूजिंग द प्रीवियस फॉर्मूला दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, जो नया बेस में होते हैं. 8 मल्टीप्लिकेशंस होते हैं एंड 4 एडिशंस होते हैं, ये हम डिस्कस नहीं किया था. So let's consider in general case, जब हम लोग नायव केस में चल रहे थे, this is our नायव केस only ना. So ऐसे आपने कितने स्टेटमेंट्स लिखने थे, ऐसे जो आपने कंप्यूटेशंस लिखी हैं, this will be, I have already discussed 1 2 9 7 1 2 6 है, so there will be actually 4 statements. Okay, we have discussed this. 4 statements will be obtained, and in these 4 statements, how many multiplications in one statement? There are actually 2 multiplications. So in that case, we are going to do 2 multiplications. So 4 multiplied by 2, which will be equivalent to 8 multiplications. Perfect. 8 multiplications will be done. So in case of Strassen also, we are carrying like 8 multiplications and 4 additions. Do you know 4 additions? Yep, there are 4 additions. We are going to have 1 addition in per statement. So there are 4 statements, so 4 additions. Okay. So now what we are going to do, and subtractions are also performed, but how is subtraction performed, we'll discuss it later. And then we are going to combine the result of 2 matrices to obtain the final product. So एक जनरल केस में अगर आप सोच के चलोगे लाइक इस टाइप का आपके पास मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 4 के, और आप मान लो कि ऐसा ही आपके पास एक सिमिलर मैट्रिक्स है. ओके, लाइक इफ आई वांट टू से दिस इज लाइक इसी तरह का आपके पास एक सिमिलर मैट्रिक्स आ जाए, आई एम सॉरी, okay,
and you get the task of multiplying it. Okay, and they're asking like what will be the solution for this matrix multiplication. Okay, so in that case also आप क्या करेंगे, आप इसको multiply करेंगे. Okay, and then what you are going to do, तो आप इसको एक सिंगल मैट्रिक्स को एक सिंगल एलिमेंट की तरह मान सकते हैं. I mean to say कि okay, this is the division that we had obtained. Okay, now what we are going to do in such sort of matrix is we are going to multiply, we are going to consider this as one element, like we can say it as A. Okay, then this would be some other element. Okay, like B, you know. Similarly for this one C. Okay, and this one can be considered as D. Okay, now what are ABCD? ABCD are small matrices, and A will be multiplied with like it we can be said as E. So A will be multiplied with E plus B will be multiplied with E, F, G. So this would be G. So B into G. Okay, this would be F and this would be H. Okay, so we will write like A multiplied by E. Okay, so what would be your system? Like you're going to write A multiplied by B plus I'm sorry, it's not B. A multiplied by E plus okay, B multiplied by G. Okay. Similarly, you are going to write various statements. Now, what are ABC? ABC are separate multiplications that you have to perform. Perfect. So these are some separate multiplications that you have to perform in order to obtain your final solution. Okay, so in this case, you can see that you are going to multiply in this way, A into E. And this AE matrix is multiplication is 2 cross 2 multiplications that you are going to obtain. This is the simple way in which you are going to obtain it. But now the question arises is, Strassen, what were the improvements in this multiplication strategy? यानी जो हमने size को smaller में किया, that was divide and conquer. Now there were some improvements proposed by the people by Strassen. Like what will be the improvements? What are the improvements in this Strassen's multiplication that we are going? हमने कहा कि हमने small sub problems में कर लिया. We have computed the small sub problems and then you are free enough. Okay, then you are free to do anything. But there was some improvement क्योंकि हमने देखा कि time complexity ये n cube था. So why were there some improvements? Because इनका multiplication करने के बाद यानी जो final हमें algorithm obtain होता है, let me show you the algorithm. This is I think final answer. So if I have that algorithm which was actually based on, okay, so it's not there, I'm sorry. This I have used the actual algorithm. So in this case you are going to multiply these these systems, and what you have done is actually like 4 cross 4 है तो आपने उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया था जैसे हमने बात करी थी. like we had calculated we are going to recursively go till 2 cross 2. ठीक है, and if we are trying to solve it in this manner, so we are going to write some statements. Okay, by recursively dividing it into first matrix, then second matrix, then third matrix, then fourth matrix, and then we are going to compute the addition of these matrices. Okay, पहले हम लोग multiplication करेंगे इनका. जनरल सेंस में आप A का multiplication E से करेंगे, फिर आप add करेंगे B का multiplication G से करके. So in that case, this is the first statement that you are going to obtain in recursiveness. Then second statement will be 1 का multiplication यानी A multiplied by F and I'm sorry, A multiplied by F and B multiplied by H. Okay, this would be a second statement, then third statement and then fourth statement. So इस तरह से जब आप multiplication करेंगे, in that case आपका time complexity does not change. आपका time complexity अभी भी कितना रहता है, n cube ही रहता है. और वो हम calculations कैसे करते हैं, उस calculations को obtain करने के लिए हम use करते हैं मास्टर्स थ्योरम. यानी हम जब बात कर लेते हैं कि लाइक हमारे पास जो फंक्शन बन के आएगा उस एल्गोरिथम को ऑब्टेन करने के बाद दैट वुड बी
1 फॉर n लेस देन 2, बिकॉज हमने माना कि स्मॉल प्रॉब्लम है तो हम उसको इजीली कंप्यूट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने टाइम 1 माना। लेकिन जब आपका n 2 से बड़ा है यानी n ग्रेटर देन 2, तो उस केस में जो आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज 8t n by 2 प्लस n स्क्वायर। ओके, सो n स्क्वायर कहाँ से आया? हाउ डिड n स्क्वायर कम? फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पर एडिशन हो रहा है दिस इज नॉट अ सिंपल एडिशन, यानी आप a को e से ऐड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल a को मल्टीप्लाई कर लिया आपने e से, b को मल्टीप्लाई कर लिया आपने यहाँ पे g से, तो उसके बाद आपको पता है कि a इज नॉट अ सिंपल मैट्रिक्स। a किस तरह का मैट्रिक्स है? इट इज मैट्रिक्स एडिशन, यानी मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास a और e को मल्टीप्लाई करने के बाद एक 2x2 का मैट्रिक्स फाइनल आंसर आएगा। उसका एडिशन आप किससे करेंगे? b और g के मल्टीप्लिकेशन से। तो बोथ ऑफ देम आर मैट्रिसेस इन नेचर। ओके, सो अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो दैट वुड बी लाइक मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्टेन इज एक्चुअली मैट्रिक्स एडिशन। ओके, दैट वुड बी अ मैट्रिक्स एडिशन। Okay, that would be matrix addition. And how is matrix addition? उसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है मैट्रिक्स एडिशन की, और मैट्रिक्स एडिशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n स्क्वायर। ओके, सो n स्क्वायर ही होती है मैट्रिक्स एडिशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, सो उस तरह से आपको क्या मिला? आपने 8 रिकर्सिव कॉल्स किए। किसके लिए किए थे? मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई कितने किए, हमने 8 मल्टीप्लिकेशंस किए। तो और आपने क्योंकि जितना इसका साइज था लाइक 4x4 था, तो मैंने क्योंकि 4x4 का एग्जाम्पल लिया है, तो इट वुड बी लाइक n/2 टाइम्स रिकर्सिव कॉल्स प्लस we're going to have the n square system. Okay, तो इस केस में भी अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मास्टर्स थ्योरम से कंप्यूट करते हैं ना, व्हाट्स द मास्टर्स थ्योरम सेज? मास्टर्स थ्योरम में अगर हम बात करें तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिचुएशन कैलकुलेट करते हैं, log ऑफ, आई एम सॉरी आई एम नॉट एबल टू राइट, ओके सो लेट मी राइट समवेयर एल्स। ओके, सो जस्ट अ मिनट, so let's write it. Okay, so what do we compute is we compute log of b base a. Okay, it's not able to show but no problem, log of a base भी compute करते हैं। so in that case जो हमें फाइनल ऑप्टेन हुआ था वो कितना ऑप्टेन हुआ था? just let us see, 8t n/2 प्लस n स्क्वायर। ठीक है, सो मास्टर्स थ्योरम का हम यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज मास्टर्स थ्योरम टू कंप्यूट इट। ओके, मास्टर्स थ्योरम। ओके, मास्टर्स थ्योरम में व्हाट वी आर अंडरस्टूड आफ्टर मास्टर्स थ्योरम, सो यहाँ पर हम a किसको बोलते हैं, b किसको बोलते हैं? दिस इज कंसिडर्ड एज a। ओके, और b हम किसको बोलते हैं? ये जो लास्ट में जा रहा है दैट इज b। सो log ऑफ 8 base 2 is equivalent to how much? That is equivalent to 3। ठीक है, और हम लोग n की पावर k कंसिडर करते हैं। यहाँ पर जो k की वैल्यू है दैट इज 2। ओके, k का वैल्यू कितना है? दैट इज 2। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट केस जिसमें जो n की पावर k की वैल्यू है दैट इज एक्चुअली, आई एम सॉरी, log 2 base 2 की जो वैल्यू है ये ज्यादा है, दिस इज ग्रेटर देन k। ओके, तो k से बड़ी है ये, तो उस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं? k से बड़ा है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि दिस इज द फर्स्ट केस। ओके, दिस इज फर्स्ट केस।
ओके, तो फर्स्ट केस के केस में क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं जो फाइनल आती है वो आती है थीटा ऑफ n की पावर log ऑफ b बेस a, ठीक है। और वो हम पहले से कंप्यूट कर चुके थे, जो कि हमने कंप्यूट करी थी वो किसके बराबर थी, दैट वाज इक्वल टू n की पावर 3। परफेक्ट। तो हमारे पास जो कंप्यूटेशन आएगा वो आएगा O ऑफ n क्यूब। आर यू अंडरस्टैंडिंग? O ऑफ n क्यूब इन दिस केस। ओके, सो O ऑफ n क्यूब हमें ऑब्टेन होता है, तो हमने का कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ ये सब करने का। हमने जो इतनी मेहनत करी इट इज यूजलेस, बिकॉज इतना हमने कंप्यूटेशंस करी n क्यूब n स्क्वायर वगैरह की, स्ट्रैसन्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी इट्स नॉट एलिमिनेटिंग। सो नाउ व्हाट्स द सॉल्यूशन? So then we come upon procedure for Strasson's multiplication. तो हमने Strasson's multiplication में अभी बात करी थी that there are some matrix with order of 2 cross 2 हम 2 cross 2 में लेकर आते हैं। अब जो हम इसमें computations करते हैं वो computations तो Strasson सर ने, जो कि उन्होंने जो I'm sorry not Strasson, जो SMM में किए गए हैं वो क्या है कि 8 multiplications करने हैं and 4 additions and 4 subtractions are there. Okay, so number of multiplications is reduced. I'm sorry, शायद यहाँ पर this is not included properly. See, तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो how many multiplications are there. 1 2 1 2, okay, 1 2 3 4 5 6 7. So 7 multiplications are obtained. ठीक है, पहली बात तो multiplications कम करना है, 7 multiplications instead of 8. ठीक है, 7 multiplications. Okay, एंड 4 एडिशंस, एडिशंस उतने ही, सब्ट्रैक्शंस भी इंक्लूड करके आपने एक मल्टीप्लिकेशन कम कर दिया है। एंड दे आर कंप्यूटेड इन सम वे लाइक d1 d2 d3 एंड देन देयर इज सम फॉर्मूला फॉर ऑब्टेनिंग द फाइनल आंसर्स। उसके बाद वी हैव द एल्गोरिथम फॉर द सेम कि लाइक अगर आपका n कितना है तो आपको कैसे कंप्यूट करना है। फॉर अगर 2 क्रॉस 2 है तो आपका डायरेक्ट कन्वेंशनली जो आपका मैट्रिक्स आप उसको वैसे ही कंप्यूट कर लेंगे, और अगर उससे बड़ा है तो आप उसको छोटा करेंगे। छोटा करने के लिए आप उसके 4 सब मैट्रिसेस बनाएंगे, पहला दूसरा, फिर आप लोग उन सब में कंप्यूटेशंस करेंगे और आपने n/2 का मैट्रिक्स लिया है और ऐसे परफेक्टली करते 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 यू विल परफॉर्म 7 ऑपरेशंस, और उन 7 ऑपरेशंस के बाद आपको फाइनली C1 C2 C3 C4 आपको फुल मैट्रिक्स आपको ऑब्टेन हो जाएगा और आप फाइनल आंसर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में क्योंकि 7 मल्टीप्लिकेशंस इन्वॉल्व थे तो 70n/2 हुआ और n स्क्वायर तो रहेगा क्योंकि आपका एडिशन तो हो ही रहा है, बिकॉज 4 एडिशंस आर देयर। इनफैक्ट 4 डिविजन्स पे अगर आप कह रहे हैं कि भाई आप लोग साथ में सब्ट्रैक्शन भी कर रहे हैं तो वो भी ऑलमोस्ट n स्क्वायर ही हो गया, बिकॉज सब्ट्रैक्शन में भी सेम ही चीज होगी। तो उसके बाद हमें जो ऑब्टेन हुआ था वो था मास्टर्स थ्योरम से o की पावर n ऑफ log 7 which is actually n की पावर, I'm sorry, it's I think not written properly. It is power 2.784. Okay, so जो log 7 की वैल्यू आती है that is 2.784. Then this is the matrix multiplication situation. तो Strassen algorithm को यूज करने के बाद there is some certain range जहां पर आपका नाइफ से बेटर करता है Strassen, ओके, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड देयर इज टाइम। ठीक है, तो आप देखिए कि लाइक कौन सा है जो टाइम कम करता है जैसे जैसे वैल्यूज इंक्रीज हो रही है। तो देयर इज सम पॉइंट जब जहाँ पे दोनों मीट करते हैं उससे पहले लाइक सी, अगर हम यहाँ देखें तो स्ट्रैसन का मल्टीप्लिकेशन काफी कंज्यूम कर रहा है जबकि आपका जो नॉर्मल है वो नहीं कर रहा है। ठीक है, स्ट्रैसन जल्दी चढ़ रहा है जल्दी चढ़ रहा है जल्दी चढ़ रहा है, बट एक रेंज के बाद Strassen is a little bit slow as compared to Naive. Naive का जो मतलब तरीका है आगे बढ़ने का, that's मतलब बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग कर रहा है वो और थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है बड़े बड़े कंप्यूटेशंस के लिए। बट Strassen is taking a little bit less time, वो तो आपको क्लियर ही होगा बिकॉज 2.8 है, so 2.8 would take a little less time than this one. Okay, 2.2 थोड़ा सा कम टाइम लेगा इस केस में। ठीक है, so 2.81 something it is like 2.8104, so it would be a little less, 2.8074. Okay, however the actual one is taking 3. So this is by the graph
of matrix of size 2 cross 2, and this is how computation is obtained. Now there is some code also included for the same. First of all, we are taking the elements of first matrix, then second matrix. However, यहाँ पे तो हमने easy computation choose किया है, and then we are computing the coefficients which are required. After multiplication, the final matrix is obtained using Strassen's multiplication. So there are some constraints regarding the Strassen's multiplication. The number one constraint is it is not preferred for practical applications for the following reasons. Now, what are the reasons it is not preferred for practical applications? The number one is the constants used in Strassen's multiplication method are high, and for typical application, naive method works better. Okay, so for some particular applications, naive method is one of the best approaches. Instead of this way, हालांकि हमने वो जो graph देखा, it showed a little good thing, but in case the complexity जो constants use हो रहे हैं, उनका computation does take time. So the constants used are high, and for a typical naive application, it's not possible. And the sub matrices in recursion takes extra space. जब हमने रिकर्शन बार बार कंप्यूट किया है, रिकर्शन मतलब हम लोग बार बार बुला रहे थे, हाउ इज रिकर्शन लाइक, ये देखिए यहाँ पर वी आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट एंड देन वी आर गोइंग टू compute them once again and again and again. See, this is like we are calling Strassen how many times? 7 times we are calling Strassen, और Strassen को हम बार बार compute करके calculate कर रहे हैं. So in that case also, what we are going to do, we are going to call the Strassen function so many times to compute the Strassen. This is recursion. मैंने कहा ना multiplication के लिए you have to call it. So this is actually the recursion. It is taking extra space. यानी time के term में it's okay, but it uses stack. One more thing that I want to mention is it uses stack for computations. Okay, so it uses stack for computations. So in this case, internally, so it is a recursive call and it consumes extra space. ठीक है, तो stack data structure को use करता है computation के लिए ये. Okay, then okay, so there is some extra space being consumed because of the limited precision of computer arithmetic on non-integer values. Larger errors accumulate in this algorithm. यानी जब आप decimal systems का use करेंगे तो उस केस में यहाँ पर पक्का बहुत सारे large errors आएंगे. जब आप negative values use करेंगे तो large errors आ सकते. I'm sorry, not negative values, all the decimal values, fractional values, whatever be the case, तो यहाँ पर error आते हैं because computer का arithmetic precision is less. Okay, so and one more thing was like regarding sparse matrices. For sparse matrices, there are better methods specially designed for them. So what are sparse matrices first of all? So sparse matrix is a matrix that contains a few non-zero elements. Almost all the places are filled with zeros. Matrix of m cross n can be referred to as a 2D array with m number of rows and n number of columns. So the basic simpler thing is कि उसमें कुछ जगहों पर काफी spaces में zeros obtain होते हैं, like this case. So there are so many zeros here. So many zeros, all zeros. So most of the elements are zeros only. If you are going to notice, in that case, Strassen's multiplication is not useful. उसकी जगह बहुत सारे methods हैं that there are available for computation purposes. So as we can only see, only 8 elements out of 5 elements in the matrix are non-zero. That depicts that we just need to store the 8 elements in the memory and the rest are 0 elements which can be ignored. Okay. So there are some ways of representation of them in array and rows. So this is like we have some rows and columns multiplication, that is we learn in sparse matrix computation purposes, and there is some linked list and array list too. Now we are going to look into remembering the Strassen's multiplication method. So like
यहाँ पर जो a है, what you are seeing here is a you are thinking it to be a one element, but it's not a one element, it's also a matrix. It can be a matrix, हालांकि वो computation के लिए नहीं आएगा. Usually in questions we are going to get only an element at that place, but if अगर element नहीं आया तो in that case these are actually matrices which have to be computed first, अगर हम नॉर्मल केस में कहें. लेकिन अगर हम स्ट्रैसन से कंप्यूट करेंगे तो पहले हम लोग को ये कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी. हालांकि ये सब कैलकुलेशंस हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट के लिए आएंगी, मैट्रिसेस के लिए नहीं आएंगी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक टास्क इज टू हाउ टू रिमेंबर कि ये फॉर्मूलाज क्या है, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाउ वी आर गोइंग टू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज. ओके, so we have P5, P4, P2, P6 and so on and so on and so on, है ना. And A, B, C, see they have cleared it up. A, B, C, D are sub matrices of A of size n by 2 cross n by 2. So these are actually matrices and not a single element. हालांकि computation के लिए it's only be a single element. Now how we are going to remember it, क्योंकि हमारे पास single element case है नहीं, तो उसका एक trick होता है which is already mentioned in Geeks for Geeks. We have to remember these four terminologies: A head, diagonal, last CR and then first CR, and then row plus and column minus situation. Okay, so these are the things that we have to remember. So now we'll look forward into the same place where it has been mentioned. Now we are going to look into how we are going to remember the Strassen's multiplication. So very easily we'll do it in 5 minutes only. So first of all, remember the four rules: AHED, diagonal, last CR and first CR. Okay. और आपको मानना है कि लाइक रो में आपको प्लस करना है और कॉलम में आपको माइनस करना है. ओके, रो प्लस एंड कॉलम माइनस. ओके, लास्ट कॉलम रो, फर्स्ट कॉलम रो, डायगोनल, AHED. हम यहाँ पर कुछ कांस्टेंट्स की बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा मेथड है जिससे हम स्ट्रैसन मल्टीप्लिकेशन कंप्यूट करते हैं. A, B, C, D, E, F, G, H, P5 प्लस P4 माइनस P2 प्लस P6 एंड सो ऑन. तो हमें P5 भी चाहिए, P4 भी चाहिए. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम P1, P2, P3, P4 को कुछ नाम दे देते हैं. P1 इज कंसिडर्ड एज A, P2 इज कंसिडर्ड एज H, यहाँ AHED का, P3 as E and P4 as D for the initial computations. Okay, this is the initial computation. अब हम लोग P5 को कैलकुलेट करेंगे बिकॉज पहले आपको P5 चाहिए. So for P5 purposes, what you are going to do? The addition of diagonal addition multiplied by diagonal का addition. तो diagonal का addition is sum of the diagonal elements of matrix X multiplied by sum of the diagonal elements of matrix Y. So A plus D into E plus H. So in that case, when you are going to compute it, so you have obtained the P5. Okay. Now P6. P6 में जो आपको यूज करना है, तो AHED के बाद हमने डायगोनल की बात करें, लास्ट CR. नाउ लास्ट CR मतलब लास्ट कॉलम ऑफ X, लास्ट CR, लास्ट कॉलम एंड लास्ट रो CR. ओके, तो C में आपको याद है कॉलम में आपको क्या करना है और रो में क्या करना है. रो में आपको प्लस करना है, कॉलम में आपको माइनस करना है. सो B minus D into G plus H. Okay, so is it the same? P6 is B minus D into G plus H. For P7, the first CR rule, what you are going to do is first column row. The first column you have to minus the A minus C and row plus E into A multiplied by E plus F. Okay, so A minus C into E plus F. तो आपको P7 मिल गया, P6 मिल गया, और आपको कितने computations करने थे? You had to compute 7 computations. लेकिन अब जो आपका P1 AHED है उसका हम क्या करेंगे? उसको भी हमें लिटरली चेंज करना है. ओके, अब हमें दोबारा A को चेंज करना है. A के केस में हमको क्या करना है? A के केस में हमें उसका एडजेसेंट एलिमेंट Y में ढूंढना है. हम AHED डायरेक्ट नहीं करेंगे. तो A का एडजेसेंट एलिमेंट मतलब A के जैसा एलिमेंट कहाँ पर है? E. ओके, अब हमें कोई ऐसा कॉलम सेलेक्ट करना है बिकॉज हमने माना है कि X में हमें रो सेलेक्ट करनी है और Y में हमें कॉलम सेलेक्ट करना है फाइनल कॉम्पिटिशन्स के लिए. ठीक है, तो हमने A पकड़ा, A का मल्टीप्लिकेशन किया और हमने Y को कॉलम से एसोसिएट किया और X को रो से एसोसिएट किया. ओके, सो कॉलम के केस में क्या करते थे हम लोग? कॉलम के केस में हम लोग क्या करते थे? माइनस. ओके, तो हमने एक ऐसा कॉलम चुना इस केस में और हमने Y को एसोसिएट किया कॉलम से.
और हमने यहाँ पर एक ऐसा कॉलम चुना जिसमें हमारे पास ये जो एडजेसेंट है इसके सिमिलर टाइप की पोजीशन का एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो a into f minus h is your p1. Okay, then how you are going to compute h? So for h, which is the second element, how you are going to compute? So हमने कहा भाई h था हमारा ये, this is h. Okay, so how you are going to compute for h? So for h the computational is, यानी इसके जो सिमिलर एलिमेंट है वो है d. ओके, सो d को छोड़ के जो रो आ रही है आपकी, आप रो लेंगे इधर कॉलम, बिकॉज x को हम रो से एसोसिएट कर रहे हैं, तो a प्लस बी इंटू एच. फॉर e यू आर गोइंग टू कंसिडर, आपने कहा e के केस में तो फिर से a आ गया. नाउ इन दिस केस अगर a आया है देन यू आर गोइंग टू कंसिडर a row or a column. So e into b minus d. Okay, now let's check if it's the same. A plus b into h. Okay, for p3 we have e, and for e we have to multiply it. In this case e के adjacent ये है, e multiplied by row. I am really sorry because हम इस x को row से associate कर रहे हैं, तो c plus d. Okay, I was thinking for some other case. Now the final is d. Now we are considering d, तो d के corresponding होंगे h, और h के लिए आपको कॉलम लेना है, तो e minus d into your element d. So if you are going to see, the final answer would be the same, g minus e into d. Okay, so why g minus e? This is a little bit confusing because इसमें से किसको subtract करेंगे? We can normally I think see, क्योंकि भाई d के corresponding है तो उसी element से starting करते हुआ होगा. Like we were considering for d, तो d के लिए हमने h corresponding देखा और इसमें से minus किया है. Okay, पर a के लिए e किया था तो हमने उसे a के adjacent वाले element से minus किया है. Okay, this is the basic way of computing the things very easily. So now there was some questions that I wanted to discuss. Let's discuss them. So here I had some important things to consider. While we were considering like if a big size matrix, so how can we implement it? So it is not necessary to use to compute it to 2 cross 2 or 1 cross 1 as in case we discussed. For example, if you are having a 1600 cross 1600 matrix, then a 25 cross 25 matrix can be considered as a small matrix too. And conventional multiplication can be done at this level. So like if you are having 199 into 199, then you can split it into some portions like we have said. The method can be applied to square matrices of any dimension. They are split in half. If they are odd, then we add zeros, and that can be applied on the fly lazily, and the extra rows can be discarded. Okay, so for 199 they can be split into upper left portion and the lower right portion too. If the dimensions of 99 are 0 parallel to 100, so first of all we'll convert it into 100 and then we are going to do it. Okay, so we are having 199, so पहले हमने 100 cross 100 we have separated, and the rest things which were left on that case like 99 cross 99 वाला जो last के बच गए, in that case we will fill zeros on those places. So like they have said, they can be split into upper left portion and the lower right portion, and for this instance the product M2 is only used in the lower output, so only required 99 rows high and thus the left factor. So these are some ways in how we can divide it. There is no need for the matrices to be square. Non-square matrices can be split in half using the same method, yielding smaller non-square matrices, and then they are sufficiently non-square to be worthwhile reducing the initial operations to more square products using simple methods. Okay, so like 2n cross n into 10 cross n can be separated as n cross n into n cross n, and then finally operations can be arranged in separate situations. मतलब आपको उनको n cross n में लाने की कोशिश करनी है as per your choice. But first of all आपके पास एक ऐसा division भी हो सकता है which is not a square matrix. So they are more complicated
However, in practice, Strassen's algorithm can be implemented to attain better performance than conventional multiplication, even for small matrices. For matrices that are not at square, and even without requiring workspace beyond buffers that are already needed for a high performance conventional calculation. So these can be used to easily compute the calculation, and they are showing the basic method of computing like a1 to c1 to, it's shown in a much better way, like there are a11 plus a12 and so on, and then we do m1 plus m4, whatever the computations we have calculated. In that case, how we have remembered is totally different, and for this case this is the general term, but we'll remember it from the basic system only because it's easy to remember in that way. Thank you everyone for this Strassen's algorithm. Now we end this discussion.